कल आपका टेस्ट भी है स्कूल में? जी कल है। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स का है और पार्क स्टडीज। ओके, सो इन फिजिक्स कौन सा टेस्ट है? अभी जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के बारे में उसी का टेस्ट होना है। लाइक दैट विल बी इन फर्स्ट चैप्टर। यस। ओके, फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर होगा या देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स? एक सेकंड वो क्या बताती हूँ। ओके ओके। फर्स्ट चैप्टर में मोशन तक आएगा और स्पीड टाइम ग्राफ्स तक मोशन में। Okay, so like, will you be able to cover all these topics? यस। Okay, good. Okay, so can you tell me last time हमने कौन से topics discuss किए थे? लास्ट टाइम हमने measurement of length, Yeah, powers of 10, yeah. units और basic quantities और AR डिस्कस किया था Okay, good. Okay. और significant figures. Yeah, okay. So आपने like, can I ask few questions? Yes, Yeah, you sure. you can see your notes. Okay, like it will be open book, some sort of open book test. Okay. Okay. Yeah. Um. अच्छा, wait. I am going to share my screen. Okay. अच्छा, ratio 1 kilo is equal to 1 kilo is equal to 1 kilo is equal to 10 to the power of 10 to the power of 3. good, 10 to the power of 3. Yeah. Okay. That's equal to 10 to the power of 3. What about 1 femto? 1. Femto. एक सेकेंड। Yeah, you can see your. Okay, okay. Notes हैं आपके पास कल जो हमने किए थे? जी वही वो निकाल रही थी वही। Yeah. Okay. 1 femto is equals to 10 to the power of minus 10 minus 12 minus 12. No. Femto, Femto, 1 Oh, femto. अच्छा 10 to the power of minus 15. Yeah, 10 to the power of, yes, 10 to the power of minus 15. Good. What about auto? 10 to the power of minus 18. Okay. What about pico? 10 आप रिपीट कर सकते हैं? Pico, Pico. 10 to the power of 18. 10 to the power of 80? 18 1 8. Pico, Pico. Oh, 10 to the power of minus 12. Yeah, 1 pico is equal to 10 to the power of minus 12. Okay. 1 nano is equal to 10 to the power of 10 to the power of minus 9. good. Yeah. 1 micro is equal to 10 to the power minus 6. That's too easy. 1 milli is equal to 10 to the power minus 3. इसको आपने इस तरह याद करना है, okay? Like atto, जी femto, pico, nano, micro, milli, centi, deci, deca, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, okay? Exa is equal to 10 to the power of 18. Peta is equal to, like जिसके end पे a आता है तो that will be positive, okay? That will be like ओके 10, yeah, peta. In peta there is a at the end of this word, okay? That is equal to 10 to the power of plus 15. Tera 10 to the power यस of plus 12. Giga, अच्छा giga को आप, इसको मैंने इस तरह याद किया था, like my during my O level, like giga is G. So G is also same like 9, okay?
So that's equal to, yeah, that's equal to 10 to the power of 9. Okay. 9. Yeah, Yeah. mega 10 to the power of 6. That's easy. Kilo to like that's 10 to the power of 3. 3. Deca is 10 to the power of 1. अच्छा फिर एंड में जब आई आ जाए या ओ आ जाए सो दैट्स मीन्स कि नेगेटिव होगा. ओके. डेसी मीन्स लाइक DECI. एंड पे आई आ रहा है 10 टू द पावर ऑफ -1. 10T Yes. 10 to the power of -2. Milli 10 to the power of -3. Micro एंड पे ओ आ रहा है. ओके. आई या ओ, I and O come at the end of the letter, okay, then it means कि negative होगा. Okay. Micro 10 to the power -6, nano 10 to the power -9, pico 10 to the power -12, femto 10 to the power -15, and auto 10 to the power -18. Okay. अच्छा. Yes. Yeah, good. Okay. 5,000. So 5,000, can you write it in scientific notation like 5 times 10 to the power of क्या हो जाएगा यहाँ पे? It will 10 to the be, power of 3. yeah, 10 to the power of 3. Good. Yeah. Okay. What about this 0.0? If I want to write 5,000 in this form, 0.005. No, wait. 0.005. In scientific notation, it will be 10 to the power of minus 5 times 2. 10 to the power of. It will be like मैंने point यहाँ पे, this is my temporary address, right? So Yes. it will be 1, 2, 3. 3 digits. 3. In between these 2 points, we have 3 digits. So it will be negative. Why negative? Because it's in the negative x direction. Okay. Okay. Now let's come toward the significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स थे उसको आप देख लो, लाइक एक नज़र देख लो. उसके बाद मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ. उसके आपने सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करना है. ओके. उसके बाद हम न्यू टॉपिक्स की तरफ आते हैं फिर. ओके. सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं याद कर रहे थे कल वो. नहीं, वो कुछ रूल्स थे. 5 रूल्स मैंने कल लिखे थे आपके लिए, तो वो आप देख लो. उसको याद नहीं करना, बस एक नज़र देख लो. तो ओके. या okay, Alicia, can you tell me the number of significant figure in all these numbers? Okay. 5,000. I think there are 4 significant figures. Okay. This is your answer, not my answer. Okay. I will write that. Okay. Because 7.400 में I think there are also 4 significant figures. okay. 0.0879 में I think there are 3 significant figures. Okay. 70053 में there are 5 significant figures. Okay. 4.289 में there are also 4 significant figures. Okay. Okay, good. For this, you will need to read the rule number 5. Okay. इसमें there's going to be 1 significant figure if it's not 4. What about now? Now there's going to be Avivi, I think 4. Okay. I think. So if there is a decimal point, okay, in a number, then all these are your significant number. Okay. फिर आपने if 0 come after the non-zero digit, then you will need to count all these 0 in significant figure. Okay. If there is a decimal point, okay, you will need to remember this. If there is a decimal point, then you will need to count all these zeros. Okay. But if there is no decimal point, then it means that then you will not count all these zeros in significant figure. Okay. Like all these zeros come after the non-zero digits and there is no decimal point, then you will not count all these zeros in significant figure. Okay. Like in this case, there will be 1 significant figure. But if there is a decimal point, then there will be 4 significant figure. Okay. ये रूल नंबर 5 था. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर दिया था. ओके. Okay. Now
अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी दिए थे दैट्स रिलेटेड टू एरिया, वो आपने डिस्कस किया था, सॉरी आपने चेक किया था कि नहीं? वो नहीं, टाइम नहीं मिला कल। ओके सोना पड़ गया, फिर आज छुट्टी लेट हुई थी थोड़ी सी मेरी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम आज अभी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। Acha, it's too easy. Like, if you want to find the area of the this shape, okay, like square or rectangle or any shape, if that's given to you, then it's too easy. Like how you will find the area. Okay, I hope you have studied all these thingy in your math subject. Okay, like what you will do, you need to multiply these two numbers. This will give you the area. Okay, right? ये तो आपको आता है ना, अलीशा? जी आता है। Yeah, okay. So, like there are some, like if circle is given to you, then you will use some formula. So, what is that formula? सर्कल के वॉल्यूम के लिए, एरिया के No, लिए? no, no. Circle का volume नहीं होता, circle का area होता है. So, for if you want to find the area of the circle, so what you will do, like you will use formula for this. पाई आर स्क्वायर। Yeah, pi r square. Good. Okay. What is the difference between area and circumference of the circle? सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस में ये डिफरेंस होता है, सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब area is the total Yeah, surface good. area taken Yes, up yes, by the yes. circle, Yeah, but okay. Like if you want to measure this length from this up to this, so you'll use the circumference. And if you want to measure the this complete area, so you use this formula pi r square. Okay. yes, The circumference formula is 2 pi r. Is it right? I think so. Okay, this is Yes, to 2 pi r. Okay, that is the formula for finding the circumference of the circle. Okay. yes. तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ओके, अच्छा इसके लिए हमने स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करने हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, देन यू विल यूज़ दिस फार्मूला 1/2 बेस टाइम्स हाइट। ओके, बेस टाइम्स हाइट। Yeah. ओके, इसका भी 1/2 बेस टाइम्स हाइट हो जाए, दिस विल बी द हाइट। ओके, तो इजी है, Yes. इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम की तरफ आ जाते हैं। सो लाइक वॉल्यूम इज, कैन आई राइट इट लाइक दिस, माय वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया टाइम्स लेंथ। ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, बट आई थिंक यस। लाइक व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम? वॉल्यूम को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? लाइक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इस या तरह। इफ देयर इज ए क्यूब, जहां पे भी आपका 3 आ जाए, ओके, लाइक इफ देयर इज ए क्यूब, देन इट मींस दैट दिस इज योर वॉल्यूम। ओके, if there is a square, Yeah. then it means that this is your area. Okay, so like this area will give me square, and this like let's suppose I am taking meter. Okay, so this will be meter square times the unit of the length is meter. Okay, let's suppose this is also meter. So in multiplication the power should be added, so this will be like m to the power of 3 हो जाएगा. Okay, so yes, this statement is always right. Okay, like your volume is equal to the multiplication of area times length. Okay, Yes. yeah, okay. So acha, if you want to measure the volume of the cylinder, so what is the formula for finding the volume of the cylinder? Volume of a cylinder. 8 seconds. Volume of cylinder. 2 pi r square h. Pi r square h. Actually, you will need to volume is equal to area times length, right? So Yes. if you want to measure the volume of this cylinder,
what you will do, you need to measure this area. Okay, what is that area? This The is circle. radius? Yeah, this is circle. So what is this area? The circle. Area of the circle. Simple. Area of the circle. ये area क्या है? This area. Area of the circle. Yeah, actually like area of the circle का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने few minutes पहले बोल मुझे. Area of a circle. Yeah, Area of a circle का फॉर्मूला था pi r square. yeah. So now I am going to change this volume into the volume of the cylinder, okay? And that will be equal to the area times length, okay? So area of the circle, that is equal to pi r square, okay? Times, you will need to extend this area up to height h, okay? Yes. This is the height of the cylinder, okay? So if you extend it up to height h, so instead of length, I will put h, okay? तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. ओके, नाउ यू विल नॉट नीड टू लाइक इसको आपने याद नहीं करना, बस इसको आपने इसी कंसेप्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करने, एंड होपफुली लाइक यू विल रिमेंबर दिस कंसेप्ट फॉर एवर. ओके, फार्मूला याद कर लोगी, कल फिर आपसे आप भूल जाओगे उसको. तो इंस्टेड ऑफ लाइक याद करने से आप कंसेप्ट को क्लियर कर दिया करो, ताकि आपको फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स ना हो. ओके. Yes. So, yeah, the volume of the cylinder is equal to pi r square, which is actually the area of the top circle, okay? And if you extend this area up to height h, so it will give you volume, okay? Pi r square. So pi r square h will give you this volume, okay? ये पूरा complete volume आपको दे देगा, okay? Yes. So, like you understand this concept? Yes. Yes. Okay. Now, if you want to measure the surface area of this cylinder, so what you will do, if you want to measure the surface area of the cylinder, so surface area, this is area, okay? Yes. So that will be equal to the top area क्या हो जाएगा? Pi r square हो जाएगा. R square. Okay, bottom area भी pi r square हो जाएगा. What about the curved surface area? इसका curve भी होगा ना, इस तरह curved surface area. How you will find the curved surface area? Like this one. This curve. 2 pi r h. Yeah, 2 pi r is actually the circumference. Okay, 2 pi r is the circumference. And if you Yes. extend this circumference up to height h, that will give you the surface area of the curved surface area, okay, of the cylinder. 2 pi r h, okay. तो इसी तरह आप अपने concepts को clear कर दिया करो, तो in future like you will remember all these things, okay. So like surface area of the cylinder will be equal to pi r square plus pi r square. This is the upper surface, this is the bottom surface, this is the curved surface, okay. So that will give you the surface area of the cylinder, okay. Easy है, इतना मुश्किल नहीं है, okay. Okay, now there is also the conversions यहाँ पे इन्होंने दिए हैं. So last time I also told you that I will do this in next class. Like if you want to convert the centimeter into meter, so how you will do this? Like if I give you 5 centimeter and the question is convert this into its meter. So how you will convert this? It's too easy. Like क्या करना है आपने? 5 centimeter. This is 5 centimeter. Okay, times in 1 centimeter. In 1 meter we have how many centimeter? 100. Yeah, 100 centimeter. Good. Okay, why I am writing like this? Because I want to cancel this centimeter by this centimeter. So I will write it like this. 1 meter is equal to 1 meter over 100 centimeter. Okay, 1 meter will give you 100 centimeter. So what will happen? Yeah. This centimeter will cancel out by this centimeter. So like it will give you 5 divided by 100, or you can write it like this: 5.05 meter. Yes. Okay, so like through this method you can easily
do the conversions. Okay, let's suppose 5 kg is given to you in gram. Let's suppose 5 kg is given to you. Okay, and the question is convert this into the gram. Okay, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल 5 kg times 1 kg is equal to, I am writing it in the denominator so that this kg will cancel out by this kg. Okay, so 5 kg. yeah, 1 kg will be equal to 1000 grams. Okay, 1000 gram. Okay, so this kg will cancel out by this kg, so now you will get 5000 this g. Yes. ये तो काफी इजी थे, लाइक आपने ये शायद ग्रेड 5 ग्रेड 6 में पढ़े होंगे, बट नाउ जी, इफ पढ़े। यू वांट टू कन्वर्ट दिस लाइक 1 centimeter cube, then what we will do? 1 centimeter cube? Yeah, if you want to convert this 1 centimeter cube into its meter, so हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे। या साइंटिफिक नोटेशन या आप उस तरह भी लिख सकती हो, लाइक can I write it like this? 1 centimeter cube is equal to 1 centimeter times 1 centimeter times 1 centimeter. Yes. Okay, so now you will need to convert it. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में और वो कहते हैं उसके ऊपर क्यूब लगा लेते हैं, सो दैट इज रॉन्ग. ओके, like you will need to convert centimeter into its meter 3 times. Okay, so Okay. yeah, so 1 centimeter, first of all you need to convert this centimeter into meter, so इसके साथ multiply कर लूँ, like I will write 1 centimeter over here, so 1 meter is equal to 1000 centimeter. Okay, Yes. same for this second one, you will write 1 meter over 1000 centimeter. Okay, same you will also do it for third centimeter. That will be 1 centimeter times 1 meter divided by 1000. Okay, so what will happen? This centimeter will cancel by this centimeter, this centimeter will cancel by this centimeter, this centimeter will cancel by this centimeter. So 1 meter यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. Okay, so like this will be 1 times 1 times 1, so this will be 1 meter cube. 1 meter cube divided by mental multiplication कर लो यहाँ पे 1000 times 1000 times 1000, that will give you 1 million. No, this is actually No, more than 1 million, more than 1 million में 6 years होता है, इसमें 9 है. या इसमें 9 है, तो like 10 to the power of 9, 10 to the power of 9 is equal to 10 to the power of 9 is equal to prefix giga. या गीगा. गुड, गीगा जी से आपने करना है. ओके, लाइक दिस इज 9, तो गीगा. ओके, yeah, so 1 okay, can I write it like this? This will be 10 to the power of minus 9 meter cube. Yes. If this is negative 9, then this will be if it's negative 9, then it will be nano. Yeah. Nano? Yeah, nano, nano. Good. Yeah, that will be equal to nano. Okay, so your 1 meter cube, 1 centimeter cube will be equal to 10 to the power of minus 9. Wait, we did mistake. आपने भी मुझे नहीं एक्नॉलेज किया, अलीशा. Yeah, कहाँ पे किया मिस्टेक? Now it's your job. पता नहीं. Okay, in step number 2, there is some sort of mistake. Now, find it.
Uh, okay. 1 meter is equal to how many centimeter? 100,000 लिखा हुआ है. Yeah, यहाँ पे 1000 है. So like this is the big mistake. Okay, not the silly one. So First, this so now this will be median. Yeah, this will be median. Okay. So this will मैं be, इसलिए कहा था कि 6 zeros होंगे million. yeah, you said this, but यहाँ पे अगर 3 होंगे like और 1000 नजर नहीं आया कि यहाँ पे 3 zeros लिखे हुए हैं. 3 zeros, then if you do the mental multiplication, then it will give you 1000 times 1000 times 1000 will give you 10 to the power of 9 giga. Yeah, but 100 times 100 times 100, like 1 times 1 will give you 1, then you need to add zeros. वो mental multiplication हम इस तरह करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 zeros आ जाएंगे. So 10 to the power of 6, if you bring this into the numerator, then this will give you 10 to the power of minus 9, negative 9, okay? Nano. Sorry, Yes. not 9, 9, 6. Micro. Yeah, micro. ओके सो अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि बस वो इसी को कर लेते हैं. ओके, लाइक आपने क्या करना है, इफ दिस इज क्यूब या इफ दिस इज 5, सो यू विल नीड टू राइट इट लाइक दिस. ओके, Yes. देन यू विल डू द कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप. ओके, Yes. okay, this is all about the volume. Okay, में कोई न्यू पॉइंट्स नहीं है जिसको, लाइक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस सिलेंडर, राइट? आपने याद नहीं Yes. करना, ये फार्मूला याद नहीं करना, बस इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर लो. ओके, तो इन फ्यूचर जब जी. भी आपसे कोई पूछ ले तो आपने क्या करना है कि अच्छा दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम. तो वॉल्यूम, दिस विल बी द एरिया. ओके, वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू द एरिया टाइम्स लेंथ. तो एरिया, आप टॉप एरिया ले लो और उसके बाद एक्सटेंड कर लो उसको नीचे. जिस तरह हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्यूब लेते हैं, यहाँ पे क्यूब का हम क्या करते हैं, हम टॉप एरिया फाइंड कर लेते हैं क्यूब का. ओके, क्यूब का हम टॉप एरिया फाइंड कर लेते हैं, दैट इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ. ओके, फिर उसको हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक यू विल एक्सटेंड दिस सरफेस एरिया अप टू हाइट h. ओके, Yes. so that will give you volume. Okay, Yes. yeah, वैसे भी हमें वो एग्जाम में अब से फॉर्मूला शीट से शुरू कर रहे हैं, तो वैसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. और अच्छा, वो चीट शीट आपको प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे? जी. चीट शीट, दैट इज नॉन ए चीट शीट. वो फार्मूला शीट, फार्मूला शीट, बट जी. इन लम्स वी कॉल्ड इट चीट शीट. या हमें अच्छा, अब से शुरू कर रहे हैं, या पहले एक्चुअली, नहीं होती. yeah, actually it's too easy. If you want to if a shape like this is given to you, okay, and the question is find the sorry, मेरा drawing इतना बेस्ट नहीं है, and the question is find the volume of this shape. Okay, so आपने क्या करना है, आपने टॉप सरफेस ये एरिया फाइंड करना है. ओके, दिस इज लाइक एरिया, इसका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 बेस टाइम्स हाइट हो जाएगा. ओके, और उसको फिर ये इस हाइट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है. या सो लाइक इजी है. ओके, बस आप कंसेप्ट को क्लियर करो तो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, ओके, Yes. नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. ओके, दैट इज टाइम. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं. वन इज टाइम, सेकंड वन इज Second one is length, and there is area or volume. नो, 3 बेसिक क्वांटिटीज, जिससे आपके जितने भी फार्मूलाज आएंगे वो सब उन्हीं से, लाइक दे ऑल विल मेड फ्रॉम दैट 3 बेसिक quantities. One is time. Okay, one is time. Second one is the length. Mass. Yeah, Mass था the तीसरा. third one is the mass. Okay, so now onward we will discuss the time. Okay, length and mass. Okay, like what is
time, what is length, what is mass, and how you will measure all these things. Okay, तो अभी हम ये Yes. स्टेप बाय स्टेप इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि टाइम को आपने किस तरह मेजर करना है। ओके, द यूनिट ऑफ द टाइम इज Seconds. second. Okay, the SI unit. Okay, SI unit of the time is second. Okay, and like based on the length of the day, like you will measure the time. Okay, the 24 hour. Okay, Yes. yeah. Do you understand the difference between rotation and revolution of the earth? Yeah, this is sun. Yeah, this is sun. Okay, Alicia. Yes. And our earth is revolving around this sun, right? Yes. Okay, so मतलब एक हमारे 24 hours पूरे हो जाते हैं. Is that? Okay, so you mean that this one revolution will take 24 hours, right? Yes. Okay, and this is rotation, right? Yes. Okay, so that is actually opposite. Okay, like rotation, one rotation will take 24 hours. Yes. Okay, one rotation will take 24 hours, and one revolution will take 24 hours. no. And This is then 24 hours, and one revolution. will take a year. 365 Is days. that the 365 days? Yes. Yeah, A this year. is actually not exactly 365 days. This is actually 365.25 days. Yes. Okay. Acha, this is the front of the sun. Okay, so it means that this is the summer. Okay, summer में आपका ये होगा. This is summer. Okay, like front sun का front यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक समर होगा आपका, और यहाँ से फिर ये आपका विंटर होगा। ओके, जब अर्थ यहाँ पे आ जाते हैं तो विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? Yes. और जब आपका अर्थ यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, so that is located over here. Okay, this is the hemisphere. Okay, अच्छा, if Pakistan, like हमारी country जो पाकिस्तान, if it come like over here, so it means that this is in the morning. जब वो रोटेशन कर ले और यहाँ पे आ जाए तो इट इज़ आफ्टरनून। यहाँ पे लाइक दिस इज़ नाइट। ओके, ये आपका नाइट होगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अच्छा, दूसरे कंट्री लाइक यूएस में वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ओके, इफ़ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ओवर हियर तो यूएस विल लोकेटेड ओवर हियर। ओके, उसमें 12 आवर का डिफरेंस होता है। ओके, यूके में हम लाइक यूके से हम यूके यहाँ पे होगा। ओके, 4 आवर डिफरेंस है यूके में। So this earth is doing rotation like this. Okay, तो यहाँ पे मॉर्निंग के 4 PM हो जाते हैं या मॉर्निंग के 5 PM हो जाते हैं, तो यूके में अभी यहाँ पे 1 PM होगा। ओके, 4 आवर वो बेक होते हैं, लाइक यहाँ पे फिर वो 4 PM हो जाते हैं तो वहाँ पे 1 PM हो जाते हैं। ओके, और इसी तरह यूएस भी होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट वो होते हैं, लाइक डे एंड नाइट। ओके, अच्छा, तो how you will measure the time? Disha, is there anything in your mind? Using seconds, a clock. Good. Yes. Okay.
पहले हमारे पास वो दूसरे किस्म के क्लॉक होते थे, शायद आपने देखे होंगे, पेंडुलम होता था उसमें, द ओल्ड वॉचेस लाइक, जो जिसको हम अक्सर पेंडुलम क्लॉक भी कहते थे। ओके, शायद आपको याद नहीं होंगे, वो पेंडुलम क्लॉक होते थे, पुराने ज़माने में होते थे। वो क्या करते हैं, उसमें कोई लाइक सेकंड्स नीडल नहीं होता था। यहाँ पे आजकल कितने नीडल हैं एनालॉग क्लॉक में? आई थिंक 3 होता है। आई थिंक 3 होते हैं या जी 3 होते हैं, सेकंड्स, इज आवर्स और या सेकंड और एंड मिनट। ओके, this is for this is for second, this is for hour, and this is for, sorry, this is for second, this is for minute, this is for hour। okay, this is for minute, this is for second, this is for hour। okay, अच्छा, पहले यस। ज़माने में इस तरह के क्लॉक होते थे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, इस तरह के क्लॉक होते थे, इसमें पेंडुलम भी होता था। यस। ओके, इस तरह शायद आपने देखे होंगे। जी हम फिजिक्स लैब में गए थे, हमने पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। या पेंडुलम के साथ आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन पहले क्लॉक भी इस तरह होते थे। ओके, उसमें इस तरह, ये पेंडुलम इस तरह होता था, इस तरह जाता था, फिर इस तरह आता था। ओके, उसमें सेकंड क्लॉक, जी सेकंड नीडल नहीं होता था, उसमें सिर्फ 2 नीडल्स होते थे, वन इज मिनट्स एंड सेकंड इज फॉर आवर। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता था, इसमें अच्छा, यहाँ पे वन कंप्लीट रोटेशन क्या होता था, वो इस तरह था, लाइक आपका सेकंड नीडल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से आके 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 यहाँ पे आ जाते हैं, सो दैट विल कंप्लीट वन रोटेशन, राइट? हेलो। ओके, यस, ओके। पहले हमारे पास पेंडुलम क्लॉक में कोई सेकंड नीडल नहीं होता था। ओके, लाइक द जस्ट वी हैव 2 नीडल्स। ओके, फर्स्ट वन इज द मिनट्स नीडल एंड सेकंड वन इज द आवर नीडल। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या होता यस। था, हमारे पास सेकंड नीडल्स will complete one rotation if it start motion from this point, and it will, फ्रॉम 12 एंड एंड्स एट 12। या एंड एट 12। ओके, अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ये नीडल्स जो था इन पेंडुलम, इट विल कंप्लीट वन रोटेशन इफ इट कम टू दिस एक्सट्रीम लेवल। ओके, लाइक इफ इट्स move from mean position to extreme position, then it will यस। again come over here, then it will again come over here, so it will complete one complete rotation। okay, just like the second, यहाँ तक जब पहुंच जाता था, तो it means that this second needle will complete one complete rotation। तो यहाँ पे वो second जो मिनट्स का नीडल होता था, वो 1 डिजिट्स वो फॉरवर्ड हो जाता था। ओके, तो पहले यस। ये हमारे पास ओल्ड क्लॉक थे, ओल्ड एनालॉग क्लॉक थे। ओके, दिस टाइप ऑफ क्लॉक इज नोन एज द पेंडुलम क्लॉक। ओके, यस। अच्छा, now if you want to measure the time, okay, like if there is a cycle race, okay, and you want to measure the time, okay, so you will use what? To measure the time of, Yeah, you will use the stopwatch, right? yes, This is the cycle, let's suppose. Okay. yes, Okay, so like you will use the stopwatch, okay, over here. Okay, this is the stopwatch. Okay, on stopwatch you have a button. Okay, you will need to press this button, और इसका वो रेस जब स्टार्ट हो जाते हैं, then you will need to press that button at that mean time। Okay, अच्छा, yes, if this person start motion, okay, and at this interval you press the button, okay, so is there any yes. some sort of error in measuring the Is time? there? There will be some sort of error। okay, like आपने इतना Yeah, टाइम मेजर नहीं किया, जी, या एक्चुअली लाइक ये जब यहाँ पे पहुंच गया तो आपने फिर बटन प्रेस कर दिया, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द रिएक्शन एरर। ओके, इसको हम फिर रिएक्शन एरर कहते हैं। ओके, yes,
reaction error, okay. Yeah. Sorry, not reaction time, okay. Reaction time, yes. ये टाइम जो आपने स्किप किए हैं उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, ओके. लाइक यू विल नीड टू प्रेस बटन एट दिस मीन टाइम, ओके. जब वो यहाँ से स्टार्ट ले लें तो यू विल नीड टू लाइक यू विल नीड टू प्रेस दिस बटन एट दिस, यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है. बट सम टाइम हम लाइक बटन हमसे प्रेस नहीं हो पाता या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर, ओके. जो हमसे लाइक वो जब यहाँ तक पहुँच जाते तो फिर हम बटन को प्रेस कर लेते हैं. तो ये जो टाइम हमने जिसको हमने काउंट नहीं किया, दैट इज योर रिएक्शन टाइम. इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, ओके. अच्छा, अलीशा, we have two types of clock. One is the analog clock, second one is the digital clock, okay. जी. So you will prefer analog clock या digital clock? Digital clock. Why? It's easier to read for someone who doesn't know how to read the analog clock. जैसे मेरी दोस्त है उसको एनालॉग क्लॉक पढ़नी नहीं आती, तो वो डिजिटली टाइम ही देख लेती है, उसको सब समझ आ जाती है. Okay, yeah, that is one point. There is also another point, like discuss it in term of the error. Yes. In digital clock, if you want to note down the time, okay, by using the digital clock, so there will be less chance of error or more chance of error as compared to Less chance of error. Yeah, there will be less chance of error, okay. Like you can say that the digital clock is more precise than the analog clock, right? Yes, because sometimes parallax errors भी हो सकते हैं, Yeah, क्योंकि good. if you look at the clock from the wrong angle, you will probably read the time in minutes wrong. Yeah, exactly. That is the point. Okay, acha. And also there is another advantage, that is like if you want to measure the time less than 1 second, like if you want to measure 0.00 seconds, then digital clock will be good for that. Provide that too. Yeah, Yes. yeah, good. Okay. अच्छा, अलीशा, दिस इज ऑल अबाउट द टाइम, ओके. अब आ जाते हैं हम अच्छा, बिफोर गोइंग टू लेंथ मेजरमेंट, ओके, we will need to discuss the systematic error, okay. Yes. Do you know about the random error? Could you repeat that? आपकी voice crack हो रही थी थोड़ी सी. Okay, okay. We have random error, okay. We have random error, we have systematic error. Yes. Yeah, systematic error. Okay, like if you want to perform experiment in lab, okay. So especially in chemistry, okay. So there will be some sort of conditions, like under that condition you need to do some experiment inside this lab, okay. Like you will need to keep the temperature of this room 25 degree, okay. You will need to keep the some specific pressure of this room, okay. इसमें जो प्रेशर होगा वो भी आपने उसको भी देखना है, में टेम्परेचर को भी देखना है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने इनकाउंटर करना है फॉर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री, ओके. Let's suppose the temperature of this room is 50 degree and you are performing an experiment in this room, or you are performing a reaction in this lab, and the requirement of the temperature for that reaction is 25 degree, but your lab temperature is 50 degree. So इसकी वजह से उस रिएक्शन में there will be some sort of error. That error is your random error, okay. उसको हम random error कहते हैं. जी. Another type of error is the systematic error. It is that type of error which come from the system, okay. Like जो आप system use कर रहे हो और उसकी वजह से जो error arise हो जाए, तो उसको हम फिर
सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ओके। जी। इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। Let's suppose you want to measure your own height, okay. Yes. My drawing is not too good, but also you will understand that what is this. Let's suppose this is person A, okay. Yeah, it's me. Yeah, let's suppose this is person A, okay, and okay, and you will need to measure the height of this person, okay. Okay. And you have ruler, okay, and that ruler is this one, okay. This is that ruler, okay. Yes. अच्छा, इस रूलर के ऊपर जो हमारे पास नंबर्स हैं, दैट इज दिस विल बी 0, ओके, देन 1 2 3 4 5 इस तरह है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 2, okay. So what do you think the height of this girl will be 7? Let's suppose this is कोई भी यूनिट आप ले लो, ओके, हाँ, मीटर ले लो या What unit is this in? या फीट ले लो, ओके। Okay. So this is impossible, but let's suppose, okay. So what do you think? The height of this girl will be 7 feet? No. Hmm. Good. Why? No. Because I'm not 7 feet tall. 7 feet. No, like let's suppose. Okay, this is just the supposition. Okay. Okay. Uh, the height of this girl will be 7 feet. Is it right? No, I don't. No, 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 it's not right. Why? Because the the zero is touching above the ground. Yeah, the zero is So not touching about the ground, right? Good. Yeah, so it means that there is some sort of error, and that error is this one. This. systematic error. Yeah, this error. Okay. Let's suppose this is x. Okay. So, acha, can I write it like this? The height of this girl will be equal to 7 plus x. Could you repeat that? Can I write it like this? The height of this girl will be equal to 7 plus x. X is this length. Oh, no, that would be incorrect. Why? Because we're trying to subtract that length from x because we've already added extra length to the girl's height. Because the ruler is touching above the ground, it would mean we've made the girl taller than she actually is. So we should be subtracting x instead of adding it. Okay, I am going to subtract this. So it will come down. Okay, this ruler will come down, right? Yes. So the height of this 7 will also come down. Yes. So it will come down by x, right? I'm not sure.
Actually, okay, this is x, okay. Yes. If you bring this 0 to the bottom of this ground level, okay, then Yes. the height of this girl will be 7 point something, right? Yes. So 17 feet. yeah, so if that is let's suppose 5, so it will be 7.5, right? Yeah. So can I say like this, my x will be equal to 0.5. Yes. So you will add this x, okay? Like your height will be equal to 7 plus 0.5. You will not subtract, like your height will not be less than 7. Your height will be greater than 7. So it means that you will need to add this x. ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 आ रहे हैं, वो आपको ये रूलर दे रहा है, ओके, दैट इज 7 फीट, ओके. व्हाट अबाउट दिस हाइट, Yeah. व्हाट अबाउट दिस हाइट दैट इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज अल्फाबेट एक्स, ओके. Yes. So this is the height of the exact height of this girl will be equal to 7 plus x, okay. But Yeah. if you write it like this, the height of this girl will be 7 feet, so it will be wrong. Why wrong? Because of the systematic error in this ruler, okay. So how Yes. you will remove this systematic error from this ruler? You will need to add something x, okay. Like you will need to measure this height, okay. आपने इस रूलर को फिर नीचे करना है और इस हाइट को भी मेजर करना है, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं उसको आपने यहाँ पे लिखना है. तो 7 प्लस दैट विल गिव यू दी एग्जैक्ट हाइट ऑफ दिस गर्ल, ओके, like the actual Yes. height of this girl, okay. Yes. So like you can remove all these error, uh, like यहाँ पे फिजिक्स में जितने भी हैं, लाइक आगे हमने डिस्कस करने, वर्नियर कैलिपर को भी हम डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज को भी डिस्कस करेंगे. There will be also like there will be some sort of systematic error present in that instrument, क्योंकि उन इंस्ट्रूमेंट को लैब में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें एरर्स आते हैं, ओके. लाइक देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एरर, ओके, इन मेजरमेंट. So how you will remove that error, then we will discuss that later on, okay. वो इजी है, Yes. इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में 0.001 का डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके. ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहते हैं फिजिक्स के वाई इट्स लाइक 0.001 एरर क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन प्रेजेंट बिहाइंड दिस एरर, ओके. तो आपने जितने भी एरर्स होंगे उसको किस तरह रिमूव करना है, सो यू विल आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग, ओके. Yes. अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब लेंथ की तरफ आ जाते हैं. हमने टाइम कवर कर लिए, अब लेंथ की तरफ आ जाते हैं, फिर इसके बाद हमने मास की मेजरमेंट करनी है, ओके. तो Okay. फॉर ह्यूज मेजरमेंट, ओके, लाइक इफ यू वांट टू मेजर द समथिंग up to 1 millimeter, okay, Yes. so you will use ruler, okay. Yes. रूलर में हम मेजरमेंट करते हैं अप टू 1 मिलीमीटर, ओके. लाइक इफ यू वांट टू मेजर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, यू विल यूज रूलर, ओके. या इफ यू वांट टू Yeah. मेजर 3 मिलीमीटर, you will use ruler, okay. So Yes. by using ruler we can measure length up to 1 मिलीमीटर, okay. if you want to measure 0.5 mm, then आप फिर ये रूलर यूज नहीं कर सकती, ओके. तो फॉर दिस यू विल यूज देन वर्नियर कैलिपर. इसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर आ जाते हैं. जी. वर्नियर कैलिपर पे हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं लेस देन 1 mm एंड ग्रेटर देन 0.5 mm, ओके. Yes. या इन सेंटीमीटर इट विल बी 0.05 सेंटीमीटर, जी. okay. Like if you want to measure 0.1 mm, then you will use vernier caliper. 0.2 mm you will use vernier caliper. 0.3 mm you will use vernier caliper. 0.4 mm you will use vernier caliper. 0.5 mm you will use vernier caliper, okay. अच्छा, if you want to measure length 0.6 mm, तो फिर आपने क्या करना है?
फिर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ओके, जी। स्क्रू गेज पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं अप टू 0.05 mm। ओके, या पॉइंट इन सेंटीमीटर इट विल बी 0.005 centimeter। ओके, like if you want to measure 0.01 या 0.9, तो आपने क्या करना है, वो हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं। ओके, इसका मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। ओके अलीशा, यहाँ पे लाइक इफ यू वांट टू मेजर 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मिलीमीटर, 10 millimeter means 1 centimeter। Okay, in 1 centimeter we have 10 millimeter, right? So Yeah. for this we will use meter rod। Okay, this here you will use meter rod। Okay, जो आपके शायद ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा। Okay, so जी। yes, so अच्छा, for this range you will use one caliper। Okay, Yes. okay, like 0.9 millimeter, 0.8 millimeter, 0.7 millimeter, 0.6 millimeter, up to 0.5 millimeter you will use one caliper। Okay, for this, for measurement less than 0.5 millimeter and greater than 0.05 millimeter you will use screw gauge। Yes. Screw gauge। Okay, अच्छा, लाइक ये जो एज होते हैं यहाँ पे, लाइक द एज ऑफ द मीटर रोड इज 1 मिलीमीटर। ओके, द एज ऑफ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द वन कैलिपर इज 0.5 mm। ओके, द the lowest value of the screw gauge is 0.05 mm, right? Yes. तो ये लोवेस्ट वैल्यू जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्रू गेज कहते हैं, राइट? Yes. ओके, इसको हम सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ओके, लाइक मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आप मेजरमेंट कर सकते हो इसको। Okay, so this is just the summary of meter rods, Vernier caliper, and screw gauge. And tomorrow class we will discuss the like how you will do the measurement by using the Vernier caliper or by using the screw gauge। Okay, so we will discuss Yes. all that in tomorrow class। अभी आप इस तरह कर लो कि जितने भी वो टेस्ट, वो उसके जितने भी हैं वो आप कर लो। If you have any confusion in any topic,
then you can WhatsApp me. Okay, I will clear it to you. Okay. Yes. ओके आप कर लो। रानिया ने आज क्लास भी नहीं लिया शायद इसी टेस्ट की वजह से, तो आप उस उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लो। ओके। जी। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझे ईमेल कर दो या व्हाट्सएप पे कर दो, तो आई विल क्लियर इट टू यू। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। हाफिज।